real time inputs, and then you can create your own PV settings. So this is possible also. Then simply by one click, after making your entire plant, you can compile your entire model. And once the compilation is finished, directly the next window which will open, that is the Hill SCADA. So basically, Hill SCADA is the place where you are going to make your complete simulation interface. In this simulation interface, you will be able to check and analyze different type of results. As you can see in the window, you can also create many actions. You can perform the various action. You can create faults. So different operating condition and the results can be obtained in Hill SCADA. Next, we are going to come to the programming of events. So basically, you can program your events, and you can also automate your events. So after running the simulation, if you are giving a fault which has to occur at a particular time, so that type of automation is also possible. You can also map the various interfaces. So basically, if you are sending some signal outside the simulator, or you are bringing some input to the simulator, you can map the interfaces of those analog and digital input output. After that, you can also test your entire plant for various conditions, whatever you have created. Analyze different type of result using the signal analyzer, and you can also do various analysis like the FFT analysis, fast Fourier transform, harmonic analysis. So all these are possible. Then we are also having the Typhoon Test IDE, which is basically the testing platform in which we are using the Python language. So our Typhoon Hill simulator, the entire software has been modeled using the Python code. And this Python program, then you can create your many test cases for your model, and you can actually run your model by doing the automation testing for different test case scenario. And then you can using the Allure environment, you can generate your HTML report, and you can analyze and check for all test cases what kind of result you are obtaining, whether the test is passed or failed. So these type of possibilities are there. Next, we talk about the application area. So, all the application areas of electrical engineering, basically like power electronics, automotive, microgrid, smart grid, control system, power system protection, and so on, have been covered by Typhoon Hill. There are also some possibility of co-simulation and integration with various third-party softwares like Simulink, PSIM, DSS, Zeiss, CarMaker, JMag RT, ECU Tracetonic, and ETAP. These are also possible with the Typhoon Hill products. So, in order to conclude my presentation, I'm going to sum up all the features of Typhoon Hill. This is basically an open platform and source. The hardware and software which is there, it has no third party software required. It has its own hardware and software. It is a vertically integrated solution with a simple plug and play, that is a tabletop setup. By just using one USB cable, very simply you can connect your simulator. There is unlimited user license which is provided with the product, free updation of software and firmware for limited time. Compilation is less than 1 minute in real time mode. This is your one stop, one shop, and it is compatible with multiple software. So here you can see the first microgrid test bed, some of the snaps which we are having, which of the product which we delivered. This one is of IIT Kanpur in 2018. As you can see, this is a customized rack in which we are having three Typhoon Hill 604, two 402 system, and one Typhoon Hill measurement terminal. Similarly, in NIT Triple TR in Chandigarh, we have given in 2019. Again, this is another microgrid test setup with some more customizations. And this one is in IIT Bombay in 2021. This is the third microgrid test setup which we have given in academics in India. So, yeah, that is all from my side in the presentation. I will just stop for 2 minutes, and I would like to ask the participants, if you are having any questions in the PPT, please let me know. Is any participant having any questions or any doubts?
Madam, no query. Please go ahead. Yes, 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 sir. Okay, then fine. I will be going towards sorry. I will be moving towards the software demonstration now. Before moving towards the exact software, I will also come and cover the Typhoon Hill website as well as Hill Academy. So, very first of all, I'm going to open this Typhoon Hill. So, this is our website. As you can see, in this you will be able to find various, details regarding all the types of hardware as well as software which are available with this Typhoon Hill, and the detailed description of each and every component as well as each and every hardware device which is available in the market. So if we go towards this solution option, you can see which application areas are being covered by Typhoon Hill, and whatever application area you're working in, suppose you want to check whether you are working in electric motor drives or maybe microgrid, so directly you can go to this link and you can check the detail and what kind of possibilities are there with Typhoon Hill. You can actually see each and everything. Next, we are having the products line. So as I was telling, we are having three product, 404, 604, and 606. So detailed brochure is available in the website. You can go and check all the details about these simulators. Then in the software also, all the things which I was covering in the slide, so you can check over here in the given links, and different type of interface card and board which are available by Typhoon Hill, those are also mentioned here. So any type of product related query, you can simply go to the product side and you can check it in our website. Next, the most important one is the support. So basically I'm going to talk about documentation part. Let me just click on this link. In the documentation, I'm going to discuss all these 5 points. So here we are having five links. The first one is application note. So basically application note is the area. If you will click on this link, you will be able to see the next page which will open. Here you can see different types of application areas in which Typhoon Hill is dealing. For example, we are having automotive is there, then we are also having microgrids, we also have electric drive, power electronics. So different type of examples have been created by Typhoon Hill. So if you want to know the detail about any example, for example, let me just open this microgrid powered by a wind farm. So this is one example which is pre-created by the Typhoon Hill development team, and it is there in our software. This is open source example which is available in the software, and that you can open in your laptop or PC. And if you want to understand how that example has been created, entire application note is available over here in the screen which I'm showing you right now. So you can come over to this screen and you can directly read about the model, how it has been made, what are all the components used, then what is the logic behind the entire model, and what are the different types of memory utilization, how the SCADA panel has been created, and what are the interfacing which is being done, and what are the result obtained from it. If there are any test cases built, so you will be able to find the test scripts also with that. So this type of a application note is available for all the examples which are there in our Typhoon Hill platform. Next, if I come towards the hardware manual, so if I will click on this hardware manual, here you can see so many options are there for all the series device. For example, let me show you for pinout diagram. So suppose if I want to understand that for Hill 404, what is the input output pinout diagram? So you can see over here. So we are having three rows at the front side of the panel, and in that three rows, which pin is indicating what kind of value that has been given over here. Similarly, it has been given for 604 as well as 606. So this type of a detail is also available. If you want to understand any type of different scenario, for example, what kind of paralleling can be done, if you want to in general read how the paralleling is being done,
what is the use of it, what is Hill Connect board which is available by Typhoon Hill, then what is breakout board, different types of possibilities are there. So all the detail have been provided in our website. Next, let me come back to the main screen. Yeah, so next is software manual. Similar to hardware, we are having each and every component of the software, and in detail it has been explained over here. For example, if I talk about schematic editor, so in the schematic editor we are having different types of options. The API is there. Then we are also having the grid component library. Let me just go to component library. So yeah, over here you can see we are having different types of library components. Suppose let me go to sources. If I want to understand what is battery cell component, so just I will click over here. If there is any reference link for any description or detailed video, that also you will find over here. And if you want to read the detail about how this component has been made, what are the different, understand the meaning of different parameters which you have to provide as input over here, so each and everything you will be able to understand very easily. All the mathematical equations that are being used over here, then what is the meaning of each and every component, a very detailed description you can find over here. So that is why I am showing you the website option, because this is very, very helpful once you start working in the Typhoon Hill environment. Next is API documentation. So I'm not sure if you are aware about API. API basically stands for Automated Programming Interface. So we are using this API, and it is very powerful tool which is being used nowadays. So what is the basically, main purpose of using API? So suppose you are working with Typhoon Hill software, but you are not familiar with the Python language. So by using API without inserting the direct code, you can just simply provide your input. Like if I want to create a fault, I will directly give my input that please connect or disconnect this switch, and after that, whatever result will happen, then we should pass that input. So instead of writing this entire code, by using API, you can directly insert that code. So in order to understand anything related to API documentation, you can open this link, and inside this again you will find various um, details regarding the API documentation. So either it is related to the Typhoon Hill test IDE, or it is related to the Typhoon Hill API. Yeah. So different types of commands have been given here. So whatever type of parameter you want to use, you can directly get the understanding of it over here. So just click on that particular component and you will be able to read about it. The last one is knowledge base and FAQ. So any type of frequently asked questions or any type of knowledge center which is being provided from the Typhoon Hill development team, it is all given over here in this knowledge base and FAQ. So that is why the website I was showing you, because it is very, very helpful, and you will find almost each and every detail in the website. Also, we are having some, videos and webinars which are there, all the published paper of Typhoon Hill, each and everything you will be able to find in the website itself. Now, last one is the community. So in the community part, you can see that different type of detail are there. What is the difference, how we are standing in the market, and how we are competing in the market. But one more thing which I would like to show you, that is the academic and research part. So here you will be able to see this Hill Academy. So I'm going to click on this. Explore Hill Academy. Simply in Google also you can write Typhoon Hill Academy, and this page will open. After that, you will be able to see that this is basically a platform similar to, maybe if you are aware with any types of MOOCs platform or NPTEL platform, that type of a platform has been created by Typhoon Hill also. So this is basically Hill Academy. In this we are having different types of courses, and all these courses have been made by Typhoon Hill team itself. Let me just click on courses.
So yeah, you can see here we are having so many courses over here for converters, AC to DC, AC to AC, communication protocol, the control of microgrid, DC to AC converter, DC DC converter, digital control of grid tied converter, Hill for microgrid, for power electronics, Hill fundamentals, and so on. So you can see most of these courses which are available over here. You can see it is written free. All these courses are free of cost. So you can simply start by learning these courses. If you want to work in Typhoon environment, you just need to create your account in the Typhoon Hill, and using that account you will log in the Hill Academy, and after that you can start doing the course. Once you complete this course, then you will be provided one dedicated certificate also from Typhoon Hill itself, and that certificate, is valid for you, which you can actually update in your resume also. So very important or most important course is this Hill fundamental. I will suggest that all of you can go today and you can, make a account in Typhoon Hill, register yourself, and then do this course of Hill fundamental. I'm sharing this link in chat also. So this is a very very important course. If you are new to Typhoon Hill or HIL system, then in this particular course you will get the example as well as each and every detail from very basic to very advanced stage, and very very detailed everything has been explained in this particular course regarding the hardware as well as software. So if you will do this course, you will be very familiar with the Typhoon Hill environment. After completing this course, you will obtain the certificate also by completing this quiz. So once you complete the quiz, then you will obtain the certificate. There is no limit in attending the quiz, so you can attempt the quiz n number of times. One more thing, that is a specialization. So you can see there are two specialization programs which are also made by the Hill Academy or the Typhoon Hill team, that is the Hill Specialist 2.0 and the Converter Circuit Fundamental. So what is this Hill Specialist 2.0? Basically specialization means that if you are taking all the five courses which are mentioned here, that is, the first one is Hill Fundamental, which I told you just now. Second one is Power Electronics, then Microgrids, Test Automation, and Communication Protocol. So one by one, if you complete all five courses, after that you will be provided a certificate for each course. That is, five certificate you will get for all these courses, and one other certificate you will be given, and that is for the Typhoon Hill Specialist 2.0. So after this completing this entire program, you will be becoming one hill specialist, and that actually is a very very important certificate which you can obtain today. You can actually update in your resume, because nowadays the demand for hill engineers has increased a lot, and each and every industry is looking for hill engineers. So that is why if you do this course and you become a hill specialist, you can actually be having a very good chance of working in the hill domain in future. So it's very useful for you, and you can actually obtain these kind of things. And the best part is that you don't have to pay anything. All these things are available in the market free of cost. So yeah, that was all about the website and Hill Academy. Now I'm going to come towards the software part. So yeah, I think we are having 20 minutes more in this meeting. Then we'll have half an hour break, and then we will come back at 12 o'clock and we will restart the session. In that session, I'm going to demonstrate two examples related to microgrid. So before the example part, I'm going to show you the software part right now. So this is our Typhoon Hill Control Center as I was showing you. So one by one, I'm going to discuss each and every detail in the software. The very first of all is device manager. So in the device manager, basically if you have connected any real time simulator with your laptop using the USB cable, that particular simulator will be shown over here. You can also make the connection by using Ethernet. So yeah, this is Madam, can you switch it to full screen mode? sir, actually in the software this window full screen is not available.
When I will open anything, then it will come into full screen. Okay, okay. Yes, sir. So this was device manager. If you are connecting any hill device, it will be shown over here. Right now, I have not connected my laptop with any simulator. So next is example part. As I was telling you that our team has created example in all the application area, whatever area you are working. Suppose if you are working in EV or battery management system, or if you are working in electric drive or power electronics. So yeah, let me just zoom this. You can see we are having different types of examples over here for microgrids also. So amongst these microgrid example only, I'm going to demonstrate two example for you today. And these many examples are available open source. So basically you can open the example, you can see how it has been created, and if you want to make some changes in that particular example to create your own model, you can do that also. Next, yeah, next is help option. So inside help option, you will find the documentation. Just now I have shown you the documentation which is available in the website. So same documentation link are available over here also. If you are facing any problem when you are creating your model, so you can refer to this help section. Then this is the license part. So when you will install the software in your laptops, after that you will be provided one license key with the real time simulator. That license key you have to insert in this option, and using that key your software will start working according to the simulator which you are having. Then we will come to these options. The first one is the schematic editor. So these three are the main options: schematic editor, hill SCADA, and typhoon test id. Typhoon test IDE is basically mostly used by industry people to create various test case scenario and for doing the pre-certification and validation study. The main part where you are creating your model, that is the schematic editor. So by clicking on this, a new window will open. In that window you will start creating your model. Once you have created your model, when you will compile the model, automatically this second window will open, that is the hill SCADA. In hill SCADA you can see and observe different types of results. Now there are some additional tools also. So very first of all, we are having this waveform generator. Let me just click on this. So yeah, this is open. So this is my waveform generator. First, I will go to the option of source file generator. If I want to create any type of source, for example, I'm having the option of sinusoidal, DC constant, sawtooth, square. Let me select sawtooth wave, and I'm providing an amplitude of 10 volts. The frequency is 50, and then let me take 10 periods over here. So now I have given some input and I'm creating my own source. I will just insert the signal over here, and you can see this sawtooth wave with 10 period times have been shown over here. Then directly after creating your source, you can save this in the form like you are having the option over here. You can save the generated file source. Otherwise, you can also open any type of example which is saved by Typhoon team. For example, you can see we have a few source example file which are present over here, like 230-volt 50 hertz phase A supply, phase B, phase C, similarly constant voltage. So you can use these examples also. If you want, you can import the data from .mat or .csv file also directly over here. So just click on this option and select your .mat and .csv file and import that file, and your source will be created over here. So first is this option, that is the source file generator. Next is PV file generator. So if I want to make a PV source of my own, so in that case, these possibility are available. You can provide all these values like VOC, ISC, delta ISC by delta T, number of cells. All these options are available for irradiation and temperature value, and then you can click on preview. So it will generate your PV source. So you can also save this PV source over here. In the bottom side, you will find this option of save the figure. You can save this and you can use it in your research paper also.
If you want to create one detailed model, then this particular option is there. Then we are also having the option of EN 50530 compatible. So basically, this is a European standard, and whenever you will provide the VOC and ISC value, all the technology settings will be automatically updated. If you will select the user defined, then you can actually change these values of alpha, beta, CGCR. All these values can be updated by you also. So you can also select whether it is silicon based or thin film which you are going to use, and by providing the value you can simply preview the waveform. Next, the third one is normalized IV curve, in which you can directly import the data, that is the CSV type of data. So for that you need to have the IV raw data, that is the uh, you know the IOC and VSC, ISC and VOC characteristics. So I'm having this CSV data over here. I have loaded this file, and then I'm going to preview the curve. If I change the value, suppose I'm putting my VOC as 1000. Now let me see. So yeah, it will change accordingly. One was this option. The second one is import IV. So directly you can import the IV. Either the .csv or .ipv file, you can directly import over here and you can create your PV waveform. So these possibilities are available by using the waveform generator. Next is the signal analyzer. So basically, if you want to do the harmonic analysis or fast Fourier transform analysis, that you can do by using signal analyzer. Then we have test and calibration unit. By using this, basically, if you are connecting your hardware and you want to calibrate it, so you can use this option. Another tool that we have, that is the LUT extraction tool. LUT stands for lookup table extraction tool. So basically, if you are having a graphical data and you want to obtain the CSV data from that graph, so you can use this tool. Directly, you place your image of the graph, and from that graph, it will take some data points and it will collect those points and give you one CSV data file. You can directly save that CSV data also. The package manager, it is like not that important for your purpose. I'm just going to skip it. So yeah, first I'm going to open the schematic editor now. So I will click on schematic editor. The new window will open. Sorry, I think there is some issue. Okay, let me just try to restart it. Just a second. I think there is some issue with this. Yeah, let me reopen the software. So yeah, this is the window which will open when I will click on schematic editor. After clicking on schematic editor, I need to open a new model file. So I will go to file, new.
404. Just select Hill 404, click on next and finish. Now it is going to load a new window along with the library components also. Just it will take few seconds. So meanwhile, if anyone is having any questions, you can ask me. Okay, I'm not sure what is the problem happening. I think many files are open in my system. That is why it is taking some time. Just give me 1 second. I will close the windows and try to restart again. Okay, I'm not sure if this is some license issue, but I will try from my side. Hello, ma'am. Yes, sir. Yes, I have a doubt here. Ma'am, Yes, yes, sir. basically, ma'am, can I speak? Yes, yes. And the thing is, I am basically working in FPGA. So, Okay. if I want to push a signal through the FPGA with the help of an ADC, analog to digital converter, or a PMOD pin, will it be? Okay. Can I do it with the help of the Typhoon Hills software, or is there any solution of doing that? I'm using a 7000 Z port FPGA. Okay. So basically, sir, Typhoon Hill simulators. Are you comfortable in Hindi also? Yes, ma'am, I'm comfortable. Okay.
बेसिकली सर टाइफून हिल सिम्युलेटर के अंदर जो एफपीजीए प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो Xilinx कंपनी का यूज़ होता है एंड Xilinx का जो प्रोसेसर उसमें यूज़ हो रहा है वो प्री प्रोग्राम होता है। तो प्री ओके। प्रोग्राम्ड करके टाइफून की टीम के द्वारा भेजा जाता है और उसके कोड में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर टाइफून वालों ने बनाया है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ में लिंक्ड होता है। ओके हाँ, मैम, तो मेरा जो जेड बोर्ड है मैम, वो जाइलिंक्स का ही ओके। 7000 जिंक जेड बोर्ड। और हाँ, जो मैम पी मॉड पिन है, पी हुँ, हुँ, मॉड 82 पिन, ओके। जिसमें मैम वो एक एनालॉग टू डिजिटल 12 बिट कन्वर्शन टू मतलब चिप है, जिससे आप कोई भी एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल डिजिटल में कन्वर्ट करके एफपीजीए के अंदर डाल सकती हो। तो वहां ओके। से आपको वहां पे आप डंप कर सकते हो। तो अगर मैंने बाहर से कोई भी सिग्नल, अगर 2.2 वोल्ट का कोई भी सिग्नल मैं पुश करना चाहता हूँ एज ए फीडबैक, हुँ, जैसे हुँ, कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर के ऊपर काम कर रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, क्लोज लूप के लिए मुझे वो बाहर से एक एज ए फीडबैक मुझे बाहर से एक सिग्नल लाके मुझे एफपीजी, बिकॉज एफपीजी मेरा कंट्रोलर होगा, हुँ, तो हुँ, कंट्रोलर के ऊपर मुझे फीडबैक देना होगा जो कि बाहर से आएगा विद द हेल्प ऑफ एन एडीसी। तो येस। एफपीजीए तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को लेगा, हुँ, उसके हुँ, अंदर आप एनालॉग सिग्नल को आप कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में डाल के आप एफपीजीए में आपको डंप करना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ, इसका कोई इंटरफेसिंग टेक्निक है या फिर क्योंकि मैं वीवाडो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उसके हुँ, लिए हुँ, मुझे चाहिए वेरिलॉग या वेएचडीएल प्रोग्रामिंग। तो ऐसा ओके। कोई इंटरफेसिंग टेक्निक है आपके ये इसके पास, टाइफून हिल के पास, या फिर कोई जिससे मुझे हेल्प मिल सके, या फिर सबको? सर, आपका जो कंट्रोलर आप बना रहे हैं अपने प्लांट मॉडल के लिए वो एफपीजीए बेस्ड है बेसिकली। हाँ, तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हम लोगों का 404 डिवाइस है। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनालॉग पिन्स हैं। हाँ मैम। इसी तरह से सर दूसरी साइड पे डिजिटल की पिन्स होती हैं, ओके मैम। जैसे ये है। हाँ मैम। तो इस तरह से इन्हीं पिन्स में कुछ पिन्स इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं और हाँ मैम। कुछ ग्राउंड पिन्स होती हैं। हाँ मैम। अब जो सिमुलेटर सर इसके अंदर जो एफपीजीए है वो तो प्री प्रोग्राम्ड है। तो अगर आपने अपना प्लांट लैपटॉप में बनाया और उसको आपने इसमें लोड कर दिया हाँ। तो इसके एफपीजीए पे रियल टाइम पे आपका मॉडल रन होने लगेगा। उसके बाद आप अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हाँ। यहाँ से जो भी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप एक जंपर वायर लगाइए एनालॉग पिन में और ओके। उस जंपर वायर से ले जाके आप अपने एफपीजीए कंट्रोलर पे कनेक्ट कर दीजिए। तो इससे हो सकता है मैम? जी, जी सर। अगर आप एक्सटर्नल कंट्रोलर कनेक्ट कर रहे हैं, आपको सिंपली वायरिंग से कनेक्शन करना है, बाकी कोई इश्यू नहीं आएगा। और इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे एनालॉग डिजिटल पिन्स अवेलेबल हैं। तो मुझे पी मॉड पिन की जरूरत नहीं होगा? सर डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्टेज रेटिंग पे वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे सिम्युलेटर की मैम जो टू लिमिट है वो टू प्लस माइनस 10 वोल्ट्स है। 2.5 वोल्ट है। हाँ, तो जो भी मतलब मैं सिग्नल आप जनरेट कर रहे हैं अगर वो प्लस माइनस 10 वोल्ट के अंदर है तो आप उसे एज़ इट इज़ भेज सकते हैं, आपको कुछ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिवाइस का नाम क्या है मैम? सर ये 404 डिवाइस है, इसी तरह से टाइफून 604 भी है और सिम्युलेटर। 606 भी है। ओके ओके। जी, थैंक 2 यू जी और मैम। डिवाइसेज़ हैं 604 एंड 606। जो मैडम 606 है वो लेटेस्ट डिवाइस जी, जी मैम। मैडम मेरा एक जनरल क्वेरी है। हाँ सर। बोल रहा था जैसे आप लोग का जो हिल एकेडमी है वहाँ से हम लोग फ्री में वो जी, टाइफून का कोर्स कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म में हम मास्टरी कर सकते हैं तो ठीक है। जी, तो अगर कोई अगर एमटेक और बीटेक स्कॉलर सपोज जिसके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट पे ये सिमुलेटर अवेलेबल नहीं है जी। तो आप लोग का कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या उसका मॉडल बना के बस उसको बस रन करके उसको एकेडमिकली यूज करने के लिए कोई वैलिडेशन कर सके? सर तो बेसिकली हम लोग जैसे आप मैटलैब यूज़ करते हैं तो वो एक ऑफलाइन सिमुलेशन है। हुँ, उसी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम लोग मतलब वर्चुअल लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी कोई भी स्कॉलर है या कोई भी स्टूडेंट है वो टाइफून हिल वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाएगा यहाँ पे माई माई टाइफून लॉगिन में जाके, तो उनका अकाउंट बनाने के बाद उनके ईमेल पर एक एक्टिवेशन की आएगी। वो एक्टिवेशन की उनके सॉफ्टवेयर को वर्चुअली रन करने के लिए होगी। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, वो यहाँ पे जाके अपनी उसी की को लाइसेंस में इंपोर्ट कर देंगे।
एंड अच्छा। उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर जो है वो उनके पर्सनल लैपटॉप में चलने लगेगा। ये सारे लोग आज भी कर सकते हैं, मतलब अभी इस सेशन के बाद आप लोग वेबसाइट से डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जाके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड का सबसे नीचे आएँगे वेबसाइट में, तो ये लिंक मिल जाएगा आपको। इस पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक्टिवेशन की, माय टाइफून सब्सक्रिप्शन, डाउनलोड टीएचसीसी। तो एक-एक करके आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन की पे आप जाएँगे। इसमें जाके आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करके सबमिट कर देना है, तो आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन की आ जाएगी। नेक्स्ट आपको फिर इसी विंडो पे आना है और इसमें माय टाइफून सब्सक्रिप्शन पे जाना है। फिर इसमें आपको सारे डिटेल्स भरने हैं, जो भी आप अकाउंट क्रिएट करें, और लास्ट में जो एक्टिवेशन की आपकी ईमेल पर आई है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और आप साइन अप हो जाएँगे। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर आप डाउनलोड की विंडो पे जाइए, और अभी मैं 1 मिनट अपना लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, ये विंडोज़ और लाइनक्स का ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्टली विंडोज़ पे क्लिक करके अपना पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है मैडम। हाँ, तो ये एक बार। सॉफ्टवेयर इन लूप चलेगा ना? जी, जी, जी। बिना सिमुलेटर के ये चलेगा? हाँ, ये ऑफ़लाइन चलेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे अभी मैं भी अपना सॉफ्टवेयर चला रही हूँ, बट मैंने कोई सिम्युलेटर कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी मैं ऑफ़लाइन ही चला रही हूँ इसको। हुँ, ठीक है। मैडम ये वर्चुअल लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा? सर वैसे तो ये वो हमेशा के लिए वैलिड होता है, जो एक्टिवेशन की आपको टाइफून सॉफ्टवेयर से मिलेगी। लेकिन जो लाइसेंस की आपको वेबसाइट से मिलती है, उसमें कुछ फीचर्स नहीं होते हैं। मतलब अच्छा, लिमिटेड फीचर्स वाला ऑप्शन होता है वो। जब भी कोई हमारा सिम्युलेटर खरीदते हैं, तो उसके साथ में उनको जो लाइसेंस की मिलती है, वो फुल फ्लेश्ड होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। ठीक है मैडम। सर आई थिंक अभी मुझे अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि सेकंड वाले हाफ सेशन में जो 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट होगा, उसमें मैं सॉफ्टवेयर डेमोंस्ट्रेट कर देती हूँ, बिकॉज़ कुछ रीज़न है जिसकी वज़ह से सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है मैडम, तो हम लोग टी 12 ओ ब्रेक क्लॉक ले लेते पे हैं। सर जॉइन कर लेते हैं। हाँ, आप लोग टी ब्रेक ले लीजिए। ठीक है मैडम। ओके सर, थैंक यू।
So, can we start? Hello.
Hello, am I audible? Am I audible to anyone? Any of the student is there? Please let me know if I'm audible and my screen is visible. Sir, can we start? Yes, sir. Sorry. Yes, madam. Okay, okay. Thank you, sir, for confirming. My screen is visible. Yes, madam. Okay, okay, sir. Thank you. सो पिछले सेशन में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आई विल बी टेकिंग इट इन हिंदी ओनली, क्योंकि अगर आप लोग को हिंदी कंफर्टेबल है, इन केस किसी को समझ नहीं आता है तो फिर आप लोग मुझे स्टॉप कर दीजिएगा बीच में। तो जब हम लोग फाइल में जाके न्यू विंडो ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक ब्लैंक कैनवस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको लाइब्रेरी दिख रही होगी। इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके विंडो में अपना पूरा मॉडल बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट विद सम बेसिक, लाइक जैसे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हैं for three phase as well as single phase. Then we are also having many communication protocols. So in case of EV, suppose we are having this standard ISO 15118 EVCC. इसी तरह से हमारे पास CAN protocol है. Then we are having contactors. So in this case, we have the single pole, single throw, then triple pole, single throw. Different types of contactor options are also available. Then we also have converter library. So very advanced stage converter library is available. इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर टोपोलॉजीज आपको मिल जाएंगी एंड मोस्टली हर तरह का कन्वर्टर आपको इसमें प्री पैक कंपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये थ्री फेज इन्वर्टर का कंपोनेंट है, तो इस थ्री फेज इन्वर्टर के कंपोनेंट के अंदर 6 स्विचेस हैं, आइदर आईजीबीटी और मॉसफेट टाइप के,
एंड उन 6 स्विचेस को कंबाइन करके प्री पैक्ड ब्लॉक बनाया गया है। तो अब इसमें डायरेक्टली आप डबल क्लिक करके इसको पैरामीटराइज कर सकते हैं। इसमें पैरामीटराइज करने के लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आ रहा है कंट्रोल, इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं: डिजिटल इनपुट पर स्विच, डिजिटल इनपुट पर लेग, इंटरनल मॉड्यूलेटर और मॉडल। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस का यूज तब होता है जब हम हार्डवेयर इन लूप सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना मॉडल क्रिएट करा और मैं अपने इन्वर्टर को फायर करने के लिए जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल दे रही हूँ वो मैं एक्सटर्नली किसी पिन में कनेक्ट कर रही हूँ। तो उस केस में मैं डिजिटल इनपुट पर स्विच को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं फेज ए, फेज बी, फेज सी के अकॉर्डिंग जिस भी पिन नंबर पे मैं अपना इनपुट कनेक्ट कर रही हूँ उस पिन नंबर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी। सिमिलरली यहाँ पे डिजिटल इनपुट पर लेग अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो उस केस में मैं फेज ए को कौन से पिन नंबर पे कनेक्ट कर रही हूँ। पर लेग का मतलब है कि एक लेग में 2 स्विचेस हैं, तो दोनों स्विचेस के लिए एक साथ इनपुट एक ही पिन के थ्रू दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बस मुझे वो पिन नंबर सिलेक्ट करना है। ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबिलिटी है डेड टाइम पीरियड ऑप्शन की। तो डेड टाइम पीरियड आई होप आप लोग फेमिलियर होंगे कि कोई भी 2 स्विचेस सेम टाइम पे ऑफ नहीं होने चाहिए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेड टाइम पीरियड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल मॉड्यूलेटर। तो इंटरनल मॉड्यूलेटर के केस में जब हमारे पास रियल सिमुलेटर कनेक्टेड नहीं है तब हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को रेफरेंस सिग्नल तो अपना प्रोवाइड करना पड़ता है, बट जो कैरियर सिग्नल होता है वो इंटरनली जनरेट होता है। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं और सिमिलरली हम यहाँ पे डेड टाइम पीरियड और रेफरेंस सिग्नल की जो लिमिट है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। और जो लास्ट वाली है मॉडल, इस केस में हम लोग के पास जो इनपुट अवेलेबल है उसके लिए हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स का यूज करके अपना पूरा लॉजिक कंट्रोलर डिजाइन करेंगे और उस कंट्रोलर की हेल्प से हम पीडब्ल्यूएम पल्सेस जनरेट करेंगे और डायरेक्टली उसको यहाँ पे फीड कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग मॉडल के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से इसमें 4 कंट्रोल मेथोडोलॉजी हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे बक बूस्ट कन्वर्टर मिल जाएगा, आईजीबीटी लेग कंपोनेंट मिलेगा, बक कन्वर्टर है, बूस्ट है, कक कन्वर्टर मिल जाएगा, डायोड कंपोनेंट है। सो बहुत सारे पर्टिकुलर कन्वर्टर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मशीन्स की लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग के पास इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, बहुत सारे मशीन्स अवेलेबल है और इनको हम अपने एज अ लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना माइक्रो ग्रिड सेटअप में। BLDC machine is there, then we are also having this stepper motor is there। हमारे पास एक फिजिबिलिटी है 3 फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन की, जिसमें जेमैग के थ्रू इंटरफेस हो रहा है। तो जेमैग बेसिकली एक मशीन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम जेमैग में अपनी कोई मशीन को मॉडल करते हैं तो उसकी आरटीटी फाइल जो वहाँ से जनरेट होगी उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हमारा जो ये पर्टिकुलर मशीन है ये हमारी रियल मशीन जो हमने डिजाइन की है उसकी तरह एक्ट करने लगेगी। इसी तरह से जो 3 फेज कन्वर्टर का ऑप्शन था इसमें एक लॉसेस का ऑप्शन होता है। तो अगर हम लॉसेस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम अपने मैन्युफैक्चरर की जो भी स्विच की एक्सएमएल फाइल है उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पे जो हमारा कन्वर्टर है वो डायरेक्टली हमारे रियल इन्वर्टर जो भी हमारे लैब में है, जिसने जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरर डिटेल है, उसकी तरह ये एक्ट करने लगेगा। हम अपना स्विच टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आईजीबीटी और मॉसफेट, एंड डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वीटी, ईटी, ईएफ, वीएफ, वीडी, टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, डिफरेंट टाइप के वेक्टर वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और अगर चाहे तो उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं लुकअप टेबल की हेल्प से। तो या ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये हमारी मशीन की लाइब्रेरी थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने माइक्रो ग्रिड लाइब्रेरी में। तो माइक्रो ग्रिड लाइब्रेरी के अंदर भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारी तरह के DERs अवेलेबल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के अंदर हमारे पास बैक टू बैक कन्वर्टर, डीजल जेनसेट, एनर्जी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीवी पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, तो हर तरह के कंपोनेंट जो कि प्री पैक्ड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे अगर हम पीवी प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज एवरेज, सॉरी जेनेरिक, द सेकंड वन इज एवरेज
एंड जो थर्ड वाला है वो हमारा स्विचिंग है। तो इन तीन पर्टिकुलर पीवी प्लांट में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला जो जेनेरिक कंपोनेंट बनाया गया है, ये बेसिकली बहुत ही जनरल मॉडल है, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट को सपोज माइक्रोग्रिड पे स्टडी करनी है, पर वो माइक्रोग्रिड प्लांट बेस्ड स्टडी ना करके कोई और स्टडी कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं या फिर फॉल्ट साइड एनालिसिस कर रहे हैं, और उनको सोर्स साइड से ज़्यादा डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उस केस में वो जेनेरिक कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट को यूज करके बनाया गया है, और ये हमारा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है सिमुलेटर में, तो हमें फास्टर रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही जनरल वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, कन्वर्टर लाइन वोल्टेज, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, पीवी की साइड में हमें इन्वर्टर अगर हम ले रहे हैं तो उसका क्या लोड रेशियो है। इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल वैल्यूज देकर अपना पूरा पीवी प्लांट मॉडल कर लेना है। बट जब हम बात करते हैं एवरेज और स्विचिंग मॉडल की, तो ये हमारा पर्टिकुलर जो कंपोनेंट बनाया गया है, ये पूरा एडवांस लेवल का डिज़ाइन है। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल डिज़ाइन करके सारे स्विच और मेजरमेंट यूनिट्स को यूज़ किया गया है, और डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट इसके लिए हम लोग ले रहे हैं। और कंट्रोलर भी हम लोगों ने काफ़ी एडवांस लेवल का इसमें मॉडल करा है, जिसमें ग्रिड फॉलोइंग मोड है, उसके अंदर हम लोग ने तरह तरह के पावर मेजरमेंट करे हैं, सिंक्रोनाइजेशंस करे, ए बी टू डी क्यू ट्रांसफॉर्मेशन करे। तो आप इसको पर्टिकुलरली कंपोनेंट को डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करके आप हेल्प ऑप्शन में जाके भी स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देना है हर एक कंपोनेंट का, जैसे नॉमिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर, फिर फिल्टर की क्या वैल्यूज है, एडवांस लेवल में जो हमारे गेन है, पर्टिकुलर लिमिट्स है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल गेन, डी क्यू करंट डैम्पिंग, अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो इस तरह से बहुत डिटेल मॉडल हम लोग एवरेज में ड्रॉ कर सकते हैं। अब एवरेज और स्विचिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है? तो स्विचिंग बाय द नेम इटसेल्फ हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो भी इन्वर्टर यूज हो रहा है उसमें हमारे पास स्विचेस अवेलेबल हैं, जबकि जो एवरेज मॉडल है उसमें हमारे पास स्विचेस अवेलेबल नहीं है। ये वर्क हमारा पीवी प्लांट की तरह ही करेगा, बट यहाँ पे स्विचेस की जगह पे हम लोगों ने कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस का यूज किया है, जिसकी वजह से अगेन एवरेज मॉडल जो है वो स्विचिंग के कंपेयर में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एफपीजीए पे। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्विचिंग मॉडल है। तो जो भी लोग कन्वर्टर स्टेज की स्टडी कर रहे हैं, जो इन्वर्टर की फायरिंग पल्सेस की को क्रिएट कर रहे हैं, जो अपना खुद का कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो अपनी खुद की पीडब्ल्यूएम जनरेट कर रहे हैं, वो लोग स्विचिंग मॉडल को प्रेफर करते हैं यूज़ करना। अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज़ आपको इनपुट में देनी पड़ेंगी, तो कई सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हैं। सो इसी तरह से पीवी प्लांट में मैंने आपको बताया है, सिमिलरली हमारे पास विंड एनर्जी, डीजल जेनसेट, सब में तीनों तरह के कंपोनेंट्स अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आई थिंक सिग्नल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। तो सिग्नल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी भी हमारी काफ़ी एडवांस लेवल की है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी फिजिबिलिटी है। हम हर तरह का अपना एडवांस लेवल का कंट्रोलर मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लुकअप टेबल्स अवेलेबल है, सी फंक्शन अवेलेबल है। सी फंक्शन इज सिमिलर टू मैटलैब फंक्शन जो हम मैटलैब में यूज़ करते हैं। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल लॉजिकल गेट ऑपरेटर्स, एज डिटेक्शन, कंपैरेटर्स। सिमिलरली वी हैव पावर मेजरमेंट, जिसके अंदर हमारे पास हार्मोनिक एनालाइजर है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मेजरमेंट है, थ्री फेज फेजर है। देन वी आर ऑल्सो हैविंग सम सोर्सेज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप सोर्स, ट्राइंगुलर, स्क्वायर वेव, साइनोसॉइडल, स्काडा इनपुट, क्लॉक सोर्स। सिंक्स है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें हमारे पास प्रोब है। अगेन हमारे पास कई तरह के सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स हैं, जैसे अगर हम लोग डी मक्स या मक्स का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बस जॉइन और बस स्प्लिट का ऑप्शन है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं सोर्सेज लाइब्रेरी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स है, देन वी आर हैविंग टू फेज, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स,
वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसी तरह से हमारे पास सिग्नल कंट्रोल्ड है। देन हमारे पास ग्राउंड है, फ्यूल सेल अवेलेबल है हमारे पास। फ्यूल सेल में भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये बेसिकली पीईएम टाइप का फ्यूल सेल है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फ्लूइडिक कोएफिशिएंट, फ्यूल सेल ज्योमेट्री, थर्मल मॉडलिंग जिसमें हम स्टैटिक मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, डायनामिक मॉडल दे सकते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन, और फिर हम लास्ट में पोलराइजेशन कर्व भी देख सकते हैं अपने फ्यूल सेल का। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बैटरी का कंपोनेंट है, तो बैटरी कंपोनेंट में भी हम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है हमारा जनरल बैटरी कंपोनेंट, इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक लेड एसिड, लिथियम आयन, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड। अगर आप यूज़र डिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यूज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एसओसी कर्व भी व्यू कर सकते हैं जिस टाइप की बैटरी आप बना रहे हैं उसका। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एडवांस लेवल बैटरी सेल कंपोनेंट की, तो अगर सेल लेवल मॉडलिंग करके हम अपना बीएमएस बना रहे हैं या जिस भी तरह का बैटरी पैक हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम बैटरी सेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ, टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस, कूलम्बिक एफिशिएंसी। डिफ्यूजन के लिए भी आप आरसी के अप टू 3 पैरेलल सेट्स कनेक्ट करके उनकी वैल्यू दे सकते हैं। हमारे पास वोल्टेज हिस्टेरिसिस भी है, बैलेंसिंग का भी ऑप्शन है, थर्मल मॉडलिंग भी हम कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ चार्ज। तो इन सभी चीज़ों की आप स्टडी कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज, थ्री फेज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं और इसी तरह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ये आरएल सेक्शन है, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप की मॉडल डेफिनेशन है हमारी, वेदर इट इज़ द आरएल टाइप और इट इज़ द एसयू टाइप, जिसमें हम नंबर ऑफ फेजेस भी अप टू 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी एपरेंट पावर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं, कपलिंग इनेबल कर सकते हैं। बर्गर ऑन मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है ट्रांसमिशन लाइन में। इसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल भी अवेलेबल है। तो जब हम माइक्रोग्रिड्स की स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का भी इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी कंपोनेंट। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह का हम लोग पूरा कंप्लीट मॉडल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आती हूँ मॉडल के एग्जाम्पल पे। तो जैसे कि हम लोग का मेन फोकस इस वर्कशॉप में माइक्रोग्रिड्स के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे आपको माइक्रोग्रिड का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ। ये पर्टिकुलर एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोग्रिड का मॉडल है जो कि क्रिएट किया गया है हमारी डेवलपमेंट टीम से। और इस एग्जाम्पल में मैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को आपको एक्सप्लेन करके फिर रन करके दिखाऊंगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोगों ने जेनेरिक वाले कंपोनेंट यूज करके बनाया है, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी कम स्पेस लेगा। अभी मैंने अपना सिमुलेटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है अपने लैपटॉप से, तो मैं आपको जो भी मॉडल रन करके दिखा रही हूँ वो वर्चुअल मोड में रन होगा। इसलिए अभी जो भी इसमें स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है वो मेरे लैपटॉप के सीपीयू को यूज करके मेरा मॉडल रन होगा। ये हमारे जेनेरिक कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी का कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास हमने कुछ इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं अपनी बैटरी के लिए और उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्टर के लिए भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक विंड पावर प्लांट है, पीवी पावर प्लांट है और लास्ट में हमारे पास ये डीजल जेनसेट है। तो चार तरह के तो हम लोगों ने यहाँ पे डीईआर ले लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन आ जाता है, आरएल सेक्शन। ये आरएल सेक्शन हमारा लोड साइड पे भी कनेक्टेड है। अब ये हमारे यहाँ पे तीन तरह के लोड्स हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, जूम इन करती हूँ मैं। तो पहला है हमारा कांस्टेंट इम्पीडेंस लोड। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आरएल टाइप का लोड हम लोगों ने कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा हमारे ग्रिड, जो भी हमारा माइक्रो ग्रिड बनाया हमने उसके साथ। फिर आता है हमारा इंटरप्टेबल लोड। ये भी सिमिलर टाइप का आरएल लोड ही है, बस इसमें यहाँ पे हमने एक स्विच और लगा दिया है।
तो अब हम इंटरप्ट कर सकते हैं इस लोड को, जब भी हम चाहें तो इसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है वेरिएबल लोड। तो वेरिएबल लोड अगेन हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कुछ वैल्यूज के साथ, और इसे हम वेरी कर सकते हैं अपने मॉडल को रन करते टाइम। यहाँ हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मर भी यूज किया है हमारे लोड साइड के लिए। फिर आते हैं ग्रिड साइड की तरफ। तो एक पीसीसी मॉनिटर लगाया है और एक ग्रिड साइड वैल्यू लगाई है। तो ग्रिड कंपोनेंट जो है वो बेसिकली ग्रिड सप्लाई को प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तो हमारा जो है वो ग्रिड की सप्लाई पे वर्क करेगी माइक्रो ग्रिड, और जब ग्रिड साइड अवेलेबल नहीं है उस केस में हम लोग जो है अपना माइक्रो ग्रिड को आइलैंडेड मोड में रन करेंगे। अगेन आइलैंडेड मोड में रन करने के लिए आइदर हम लोग अपनी बैटरी को यूज कर सकते हैं ग्रिड फॉर्म करने के लिए, या फिर हम लोग डीजल जेनसेट को भी यूज कर सकते हैं अपना ग्रिड फॉर्म करने के लिए। ये जो पीसीसी मॉनिटर है ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इस पीसीसी मॉनिटर में जो भी इनपुट है वो हमारे कंट्रोलर से आ रहे हैं, और वो कंट्रोलर्स यहाँ पे कमांड देंगे कि कब कौन सा इनपुट अवेलेबल है, और उस हिसाब से हम लोगों का फेज जो है वो चेंज होगा। तो पीसीसी स्टैंड्स फॉर फेज चेंज कंट्रोल मॉनिटर। इसके अंदर अब हम लोग एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन चेक करने के लिए जो भी इनपुट आ रहे हैं हमारे वो इस पर्टिकुलर सबसिस्टम में जाएंगे, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ लॉजिक्स क्रिएट करे, जैसे पीएलएल के लिए, देन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, करंट डिफरेंस को चेक करने के लिए, और फिर लास्ट में हम लोगों ने अपना कंट्रोलर डिजाइन किया है। तो इस कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने ये सी फंक्शन ब्लॉक लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कोड लिखा है। ये बहुत जनरल सा कोड है सी लैंग्वेज में, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं इफ एल्स की, उनको डिफाइन करने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्विच ओपन है तो हमारा ग्रिड का सप्लाई है उसे इनपुट में लिया जाएगा, अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ओपन है तो उसे नहीं लिया जाएगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने जो है सी फंक्शन लॉजिक दिए हैं, और उन लॉजिक को यूज करके हम लोग स्विच को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपनी ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए। ये हमारा फाइनली आ जाता है हमारा माइक्रो ग्रिड का कंट्रोलर। और इस माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर में आप देख सकते हो जो इनपुट आ रहे हैं वो सारे ही हमारे स्विचेस की तरफ से आ रहे हैं। तो जो भी हम लोग पावर मेजरमेंट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर डीईआरस की साइड, जो भी हमारे सर्किट ब्रेकर के स्टेटस हैं, जो हम लोग अपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से इनपुट ला रहे हैं, डिजिटल जेनसेट से ला रहे हैं, उस तरह के सारे इनपुट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद इस माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हम लोगों ने डिफाइन करी है। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन है कि अगर हम ऑपरेशन मोड में है तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हम ग्रिड टाइड मोड में चलेंगे, जिसमें हमारी ग्रिड की सप्लाई रहेगी, और जो हमारा ग्रिड साइड से स्विच कनेक्टेड है हमारे पीसीसी मॉनिटर में वो ऑन रहेगा। इसी तरह से अगर एल्स कंडीशन है, मतलब अगर वैल्यू 0 नहीं है 1 है, तो उस केस में हम लोग आइलैंडेड मोड पे काम करेंगे। इसी सेम लॉजिक को हम लोगों ने यहाँ पे सी फंक्शन ब्लॉक में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग आइलैंडेड मोड में वर्क करते हैं तो आइलैंडेड मोड में जैसे मैंने बताया था, या तो बैटरी हमारी ग्रिड को फॉर्म करेगी या फिर डीजल जेनसेट फॉर्म करेंगे। तो वो भी डिपेंड करता है लॉजिक पे। उसी लॉजिक को हम लोगों ने यहाँ पे अगेन सी फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस क्रिएट करी हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट सी फंक्शन ब्लॉक्स को यूज किया है, और जो जो कंट्रोल कंडीशंस हमने यहाँ पे यूज किए वो सारी यहाँ पे कमेंट में मेंशन भी है। तो आप लोग इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। ये पूरा मॉडल जो है वो ओपन सोर्स पड़ा हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जाइए। एग्जाम्पल्स में जाके माइक्रोग्रिड लाइब्रेरी में आपको ये मिल जाएगा माइक्रोग्रिड एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको दो एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो अभी मैंने जेनेरिक वाला और दिखाया है आप लोगों को, इसी तरह से स्विचिंग कंपोनेंट यूज करके भी बनाया गया है। और अगर आप चाहें तो आप इसकी डिटेल में स्टडी करने के लिए इसका एप्लीकेशन नोट जो है वो ओपन करके उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं।